ट्राइंग टू लूज़ वेट, अच्छे से डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट आर्म से जा रहा है, लेग से जा रहा है, बट बेली फैट से नहीं जा रहा है। हाय, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा और आज हम बात करेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपका बेली फैट है, स्टबन फैट जो बेली पे है, वो भी कैसे शू हो जाए। मैनी टाइम पीपल कंप्लेन कि हम लोग ना डाइट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, बट हमारा जो बॉडी में ओवरऑल वेट जा रहा है लेग से आर्म से, बट मेरे स्टमक से वेट नहीं जा रहा है, बेली फैट बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैनी टाइम पीपल ऑल्सो कंप्लेन कि वैसे सुबह उठते तो फ्लैट रहता है स्टमक, बट जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट लंच, और हमारा जो टमी है वो इतना ब्लोट और इतना हैवी हो जाता है, कपड़े टाइट हो जाते हैं, बेल्ट साइज चेंज करना पड़ जाता है, जीन्स टाइट हो जाती है। सो व्हाट हैपन्स इज एंड वाई इज दिस हैपनिंग इज बिकॉज देयर इज़ अ गट इन्फ्लेमेशन। नाउ गट इन्फ्लेमेशन आपने देखा होगा कि आजकल बहुत कॉमनली यूज टर्म है ये। कहीं जब 22 ईयर्स पहले मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया था तो वी यूज्ड टू हार्डली हियर पीपल कमिंग विद गट इन्फ्लेमेशन, बट इन लास्ट 6 to 7 years आई सी दैट 1 in 3 people have gut inflammation issue. Now gut inflammation मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है राइट फ्रॉम आवर माउथ टू स्टमक टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन है। क्यों है वो इन्फ्लेमेशन? बिकॉज जो हमारा गट बैक्टीरिया है, गुड क्वालिटी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वी हैव बैड एंड गुड बैक्टीरिया बोथ, सो वो गुड बैक्टीरिया कम हो गया है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया है। Why has the gut good bacteria gone down? Because earlier we never had people coming to us and saying कि मुझे ना wheat ही सूट नहीं करता, gluten सूट नहीं करता। Yes, people who had celiac issues, जिनको gluten intolerance था by birth, उनको सूट नहीं करता है, समझ आती है। But nowadays every second person walks in says that I am not suitable to gluten, I am not suitable to lactose. Why? Because again the gut bacteria which is supposed to digest that protein from the wheat, is we are having lesser of that, the quality is changed. Also because of other certain things is the quality of the crop, the quality of the wheat, the cross breeding of so many seeds and grains which is also happening. That is also one of the reason that we are not able to digest these kind of things. ना उन सब की वजह से बिकॉज इतनी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो देन यू स्टार्ट गेटिंग दिस बेली फैट, एंड वो एकदम से हैवी फैट आता है। एंड वी ऑल नो दैट बेली फैट इज समथिंग विच इज़ मेकिंग अस अनकम्फर्टेबल। इट स्पेशली विद लंग पेशेंट्स, उनको ब्रीदिंग इश्यूज आ जाता है, या इसकी वजह से बीपी, इम्यूनिटी एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर अफेक्टेड. So let's see that what is that you all can do to reduce that belly fat. You may lose just a kilo or two, that's fine, but if you're losing in inches in your belly and you're feeling your stomach is flat and your body is able to digest food better, that means you're also on a very good path and on a right path. So let's see what is that you can do to reduce the belly fat. So देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, what is that we can do to reduce this gut inflammation. सो गट इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे बॉडी का जो बैक्टीरिया है, वी हैव टू मेक श्योर दैट दैट इज़ इन राइट प्रपोर्शन. वी हैव ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज इन आवर बॉडी, द ट्रिलियंस ऑफ gut microbiome in our body. We have to make sure that it is well balanced. How can it be well balanced? It can be well balanced with certain lifestyle changes. Okay, there is no magic food which can really help you until and unless you check on your lifestyle, you check on your entire day, your habits. You cannot change the gut microbiome of the body. So उसके लिए timely खाना, disciplined eating. Like you cannot do that one day I'm having my breakfast at 8, one day I'm having it 11, one day I'm skipping it. Do not do all these things. Give your body right meal timing, because it should know कि इतने बजे मेरे system में खाना आता है and this is what I have to do. Okay, so have your, like we tell people that you should have your sleep wake up cycle, which similarly you should have your right food cycle as well, that right meal time cycle as well. 2 is eating right proportion of food. Abhi I'll leave carb, I'll leave fat, I'll leave protein, I do high fat, I do fasting. This is all is jerk in the body. So eating a well balanced diet जिसमें एक फाइबर कंटेंट ऑफ फाइबर हो, कंटेंट ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक हमारी डाइट में हो, वेजिटेबल्स हमारी डाइट में हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट वो हो, प्रोटीन हो. सो इट हैज़ टू बी ईटन इन अ कॉम्बिनेशन. मेनी अ टाइम्स लोग क्या करते हैं कि आई एम ऑन अ प्रोटीन डाइट, तो मैं सिर्फ बहुत सारा प्रोटीन खा लूँगा, बट प्रोटीन इज़ नॉट गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड वेल unless and until you are also having some fiber and small amount of carbohydrate along with it.
isn't it? So you have to have a right amount of all food groups in your meals, which is very very important to do. Another thing is stress. Stress matlab cortisol. We all know that from our adrenal gland we release cortisol, and cortisol अगर सही अमाउंट में होता है which is good for our body, but अगर वो बहुत low या बहुत high हो जाता है, it starts affecting so many other organs. It starts affecting our blood pressure, cholesterol, immunity, gut, so many things. So you have to see that your cortisol levels are not released too much in your body because you are stressed. अब स्ट्रेस तो इनएविटेबल है, हमारे काम, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, सबकी वजह से स्ट्रेस तो रहता ही है, बट हाउ टू डील विद इट, हाउ टू गो स्लो, हाउ टू टेल योर सिस्टम कि ओके अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाउ टू स्लो डाउन ऑन सर्टन थिंग्स, हाउ टू डी स्ट्रेस बाय लिसनिंग टू म्यूजिक, टेकिंग दैट 10 minutes ऑफ ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाना खा लो, कितना भी सही अमाउंट में फाइबर, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक खा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू until and unless your cortisol levels are controlled and well balanced. So you have to see that how you have to de-stress, how to be in a relaxed state of mind, how you have to put reminders for doing deep breathing, that is deep inhalation and deep exhalation, so that your cortisol levels are well balanced. Now also to reduce your gut inflammation, certain functional foods can help. So अगर first of all अगर आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ या आपको लगता है कि ब्लोट हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, तो थोड़ा रॉ वेजिटेबल्स अपनी डाइट में कम कर दीजिए. यस, एज अ डाइटिशियन यू आर आस्किंग मी दैट इजंट इट कि हमें रॉ वेजिटेबल सैलड्स बहुत सारे खाने चाहिए. यस, दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, बट अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम पे वीक है एंड इट इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फाइबर, वी हैव टू सी दैट वी आइदर ब्लांच और वी स्लाइटली saute them and have them and not have them raw, because उतना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा. फाइबर ज़रूरी है, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, यू हैव टू ईट देम, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग देम रॉ, कच्ची वेजिटेबल्स खाने की बजाय हम उसको स्लाइटली सॉटे या स्लाइटली स्टीम करके खाएंगे. 2 is that do not have water along with your meal. You can have 15-20 minutes before or after your meals, but do not have along with the meals. It can dilute your digestive juices. 3 is sit and look at your food before you start eating, because when you look at your food, your brain gives a signal what kind of digestive juices, bile, insulin I have to secrete to digest this food. And you have to also chew your food well so that it is better digested and it is not like heavy big bites and your system is not able to digest it, and it is all getting, the food is not being able to push and your stomach is getting heavy and it's all messed up. So chewing your food well, looking at your food, being in a good state of mind, a calmer state of mind, rather doing couple of breathing exercises before your meal can also help reducing belly fat. So ये भूल जाइए कि कार्ब निकाल देते हैं तो बेली फैट चला जाएगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर कर लेंगे, खाना खाने से पहले खाना च्यू कर लेंगे, तो बेली फैट डेफिनेटली चला जाएगा. नाउ अलॉन्ग विद दैट फंक्शनल फूड्स अगर आप कुछ खा लेते हैं, जैसे कि से लिटिल बिट ऑफ जिंजर वाटर. सो अगर आप 1/4 इंच ऑफ जिंजर अबाउट 200 ml ग्लास ऑफ वाटर को हल्का सा उसको बॉईल करके पिएंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन बेटर डाइजेशन एंड सिक्रीशन ऑफ राइट अमाउंट ऑफ एसिड्स फॉर बेटर डाइजेशन. Similarly, celery water helps in reducing the gut inflammation. So celery ले लीजिए, अगर आपके पास celery नहीं मिल रही तो हरा धनिया ले लीजिए, उसको थोड़ा सा बॉईल करें पानी में, एंड वो पानी कभी भी दिन में आप पी सकते हैं, इवनिंग एट 5 or 6 o'clock. That will also help to reduce gut inflammation. Similarly, magnesium is very important if you want to reduce your belly fat. So अगर किसी को स्पेशली फ्लैटुलेंस या गैशियस या एसिडिक होता है, having magnesium supplement, or but again take a recommendation from your doctor, or having enough magnesium in your diet, which comes through various nuts, seeds or green leafy vegetables, avocado. So ये अगर आप खाते रहेंगे तो you will also see that your belly fat is comparatively lesser. So these are something which are very easy tips, that doing a breathing exercise before your meal, chewing your food well, having ginger water, having steamed vegetables, or not having raw vegetables can help you reduce the inflammation. Inflammation reduced means less load on your digestive system. Less load on your digestive system means your food is getting digested well and your body, your belly is not getting bloated and feeling heavier. So try these tips and do DM me and tell me how did you feel after following these tips.